the exchange of documents. May I invite the Minister of Foreign Affairs of Malaysia and Minister of External Affairs of India for the exchange of 6 documents. The documents are Agreement on Audio-Visual Co-Production, MOU on the Cooperation in Disaster Management, MOU on Cooperation in Combating and Preventing Corruption, exchange of letters on the MOU on United Nations Peacekeeping Cooperation, exchange of notes on cooperation in the field of semiconductors, and handover of the Framework Agreement on International Agencies. We will now proceed with the exchange of 4 documents and submission of a report. For the exchange of the first 3 documents, I invite the Secretary General of the Ministry of Foreign Affairs of Malaysia and Secretary East for the Ministry of External Affairs of India. The documents are MOC on promoting social security program and activities for Indian citizens as insured person in Malaysia, exchange of notes on cooperation in vocational education and training, and exchange of notes on security cooperation. Thank you, Your Excellency. Yang berbahagia Datuk Seri, please remain in place. May I invite the High Commissioner of India to Malaysia for the exchange of notes on cooperation of healthcare. May I invite both co-chairs for the Malaysia-India CEO Forum to submit the 10th Malaysia-India CEO Forum joint statement to the Secretary General and the High Commissioner of India. Thank you, Excellencies. Excellencies, ladies and gentlemen, we will now commence with the joint press conference with a statement by the Honourable Prime Minister of Malaysia. Terima kasih. Thank you, Excellency Prime Minister Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India, Excellencies, ladies and gentlemen. We have said yesterday in हमने ये बात बोली थी कि हम ये जो बैठक है और ये जो very vital, very strategic and critical to advance and enhance relations between India and Malaysia. Of course, we have the long-standing relations since 1957, but we have elevated it to comprehensive strategic partnership in 2024. The deep historical ties, strong people-to-people linkages, and ever-expanding economic cooperation. We'll continue to deepen collaboration in all fields: trade and investment, semiconductor, digital economy, trade in local currency, connectivity, energy, agriculture, food security, defense, education security, Tibet, including through our center at the Himalaya, healthcare, tourism, culture, people to people. It's really comprehensive, and we believe that we can advance this and execute in a speedy manner with the commitment of our both governments, both foreign ministers. And we have seen also the exchanges of 11 documents, including MOUs, and exchange of letters, which extended beyond normal bilateral arrangements, because we have covered even peacekeeping cooperation on semiconductor, healthcare, and security cooperation. Trade, of
course, it has to further extend. I mean, India is growing with leaps and bounds. One spectacular rise in the international economic and trade scene, and therefore Malaysia, in the ASEAN context, certainly benefit immensely if we could secure more ways and opportunities to collaborate with India, extending beyond the $18.59 billion that we achieved in 2025. And one remarkable feat is this decision to use local currency as far as possible. And Bank Negara Malaysia and CBI has worked on this area for ringgit Malaysia and rupee in bilateral trade and investment. Similarly, in the digital connectivity, energy and semiconductor. Well, education remains vital. Many Malaysians were educated in India, and there is a growing number of Indian students in Malaysia too. But since the last decade or so, under the premiership of my good friend Prime Minister Modi, you have seen the spectacular recognition of Indian centers of excellence education. That's not only comparable, but many of them have achieved outstanding recognition beyond the known institutions in the West. And therefore, we would certainly explore this to increase the number of students in select disciplines and fields to study in India. Tourism and connectivity is, of course, the area that we will have to give more emphasis. We have seen this spectacular increase during the past year, and we hope to benefit from Malaysia to Asia and incredible India through visa liberalization and increased air connectivity, and to see the spectacular. And I've been in India umpteen times and covered hundreds of places, and I still think that I have not covered India. It's too huge, Prime Minister. And it's an amazing country to visit, to learn the history, the culture, the arts, other than the new advancement in technology, new technology and IT. In terms of regional and international issues, I must express my appreciation, because in my discussions with Prime Minister Modi, it is not just normal platitudes and diplomatic exchanges. It is an exchange between true friends, full of trust and understanding, and therefore I must also take this opportunity to express my regards and thanks to him for his firm commitment to support all peace efforts throughout the world, be it in Ukraine, Russia, or in the case of the Middle East, particularly in Gaza. His commitment to support the peace process is unequivocal, and I must therefore express my appreciation. And as a sign of our good relations, I immediately agreed to support the decision of the government of India to open a consulate of India in Pertukaran, Sabah. Thank you. Thank you, Honorable Prime Minister. May I invite the Honorable Prime Minister of India to deliver his statement.
Your Excellency, Prime Minister Anwar Ibrahim, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। सलामत पाली। सबसे पहले मैं अपने करीबी मित्र प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम का गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष मैं आसियान समिट के लिए मलेशिया की यात्रा नहीं कर पाया, लेकिन मैंने मेरे प्रिय मित्र को वादा किया था कि मैं जल्द से जल्द मलेशिया आऊंगा, और आज वर्ष 2026 की पहली विदेश यात्रा में मैं मलेशिया आया हूं। फ्रेंड्स, भारत और मलेशिया के संबंध बहुत विशेष हैं। हम मैरीटाइम नेबर्स हैं। सदियों से हमारे लोगों के बीच गहरे और आत्मीय रिश्ते रहे हैं। आज मलेशिया भारतीय मूल की आबादी वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। हमारी सभ्यताएं, साझा सांस्कृतिक विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ी हुई है। फ्रेंड, पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों ने एक नई रफ्तार पकड़ी है, और इसमें मेरे मित्र प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का विशेष योगदान है। हमारे बीच एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में सहयोग बहुत मजबूत हुआ है। डिजिटल इकोनॉमी, बायोटेक और आईटी में आपसी इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। टूरिज्म और पीपल टू पीपल टाइज भी गहरे हुए। इन्हीं उपलब्धियों से प्रेरित होकर आज हमने हमारी साझेदारी में अभूतपूर्व गति और गहराई लाने का निर्णय लिया है। फ्रेंड, सिक्योरिटी के क्षेत्र में हम काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग और मैरीटाइम सिक्योरिटी में सहयोग मजबूत करेंगे। हम रक्षा सहयोग को भी और व्यापक बनाएंगे। एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजीज के साथ साथ हम सेमीकंडक्टर, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी में साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे। आज आयोजित सीईओ फोरम ने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के नए अवसर खोले। हम स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट से इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता बनाएंगे। फ्रेंड्स, कल मुझे मलेशिया के भारतीय प्रवासियों से मिलने का मौका मिला। अपनी उपस्थिति से मेरे मित्र प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने भी इस सम्मेलन का गौरव बढ़ाया। 30 लाख प्रवासियों का यह लिविंग ब्रिज हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। उनके वेलफेयर के लिए उठाए गए कदम हमारे रिश्तों को मानवीय आधार देते हैं। मलेशिया में भारत के वर्कर्स के संरक्षण के लिए सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, टूरिज्म के लिए ग्रेटिस ई वीजा और डिजिटल इंटरफेस
यूपीआई का मलेशिया में लागू होना, ये सभी कदम दोनों देशों के नागरिकों के जीवन को सरल बनाएंगे, क्योंकि कोई भी पार्टनरशिप तभी ताकत से सफल होती है जब लाभ सीधे लोगों तक पहुंचे। फ्रेंड, भारत और मलेशिया को तमिल भाषा के प्रति साझा प्रेम भी जोड़ता है। मलेशिया में तमिल की मजबूत और जीवंत उपस्थिति शिक्षा, मीडिया और सांस्कृतिक जीवन में दिखाई देती है। मुझे भरोसा है कि आज के ऑडियो विजुअल एग्रीमेंट से फिल्म और संगीत, विशेष रूप से तमिल फिल्में हमारे दिलों को और पास लाएंगी। हम अपने युवाओं के बीच यूनिवर्सिटी एक्सचेंज, स्टार्टअप कनेक्ट और स्किल डेवलपमेंट के अवसर भी बढ़ा रहे हैं। हमारे बढ़ते संबंधों को सपोर्ट करने के लिए हम मलेशिया में नया कॉन्सुलेट भी खोलने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इंडो पैसिफिक क्षेत्र के विश्व की ग्रोथ इंजन के रूप में ये उभर रहा है। हम आसियान के साथ पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास, शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। भारत आसियान सेंट्रलिटी को प्राथमिकता देता है। मलेशिया की सफल आसियान अध्यक्षता के लिए मैं एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मलेशिया जैसे मित्र देशों के सहयोग से भारत आसियान के साथ अपने संबंधों को व्यापक बनाएगा। हम इस बात पर सहमत हैं कि आसियान भारत व्यापार समझौते आर्टिका की समीक्षा शीघ्र ही पूरी हो जानी चाहिए। फ्रेंड, आज हमने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी सार्थक चर्चा की। वैश्विक अस्थिरता के इस माहौल में भारत और मलेशिया की बढ़ती मित्रता दोनों देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा साझा मत है कि आज के चैलेंजेस का समाधान करने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म बहुत जरूरी है। हम शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे और आतंकवाद पर हमारा संदेश स्पष्ट है। नो डबल स्टैंडर्ड्स, नो कॉम्प्रोमाइज। एक्सेलेंसी, भारत मलेशिया संबंधों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का हम सराहना करते हैं। आइए हम साथ मिलकर प्रॉस्परस मलेशिया का आपका सपना और विकसित भारत के हमारे संकल्प को साकार करें। एक बार फिर आपकी मित्रता, आपके गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको भारत में स्वागत करने के लिए उत्सुक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जुम्पा लागी। Excellencies, ladies and gentlemen, we have now concluded our joint press conference. We kindly request both leaders to remain in the hall while the rest of the